सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम उषा। आज का जो वीडियो है आप सीखेंगे हाउ टू स्पेसिफाई ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू यूजिंग स्टॉक इन हैंड लेजर इन टैली प्राइम। Opening and closing stock value reflect your stock summary report and become part of profit and loss account and current assets of your balance sheet. The reason for mismatch in the opening and closing stock value: manually data entry errors, in a different scenario migration of company data from different software, and started books in the middle of the year. Example January, मिडिल से आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो वो टाइम आपका ये प्रॉब्लम हो सकता है. इन सच केसेस यू मे वांट टू स्पेसिफाई द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू इन टैली प्राइम. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. प्रेस F11. यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इंट्रीगेट अकाउंट्स विद इन्वेंटरी. ये ऑप्शन को आपको नो करना पड़ेगा. देन कंट्रोल A करके सेव करना है. Now create a stock in hand ledger. Press Alt G. Create master ledger and enter. Enter the name of the ledger. Stock in hand. Under stock in hand, enter. Enter the current balance. Press Ctrl A to save the ledger. Now let's alter the ledger to enter the closing balance. Go to, then alter master, then ledger. Type or select the ledger and press enter. Enter the date and current closing balance. You can keep updating the closing balance every month by providing the date if needed. Press Ctrl A to save the ledger. Now let's opening profit and loss account. Please note that you can change period for profit and loss, closing and opening balance value view. Opening stock and closing stock यहाँ पे शो हो जाएगा. You can also view the ledger which values are considered. Thank you. Subscribe to the A1 Solutions channel for latest video.